हेलो एवरीबॉडी। हाँ, आप लोग कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं? कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कंप्यूटर सीख हर जगह पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसलिए कंप्यूटर सीखे तो बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। इसलिए कंप्यूटर को सीखना बहुत ज़रूरी है, और कंप्यूटर के अंदर क्या सीखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए कंप्यूटर जब आपको कहीं भी मिलता है तब टाइपिंग का प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप किसी जॉब पर जाते हो तो वो प्रैक्टिकल एक लेटर देते हैं और टाइपिंग करने के लिए देते हैं। आपको टाइपिंग करना नहीं आता तो आप वो उसका टाइमिंग रहता है, आधा घंटा और 45 मिनट्स 1 आवर वो टाइमिंग देते हैं। उसके अंदर आपको वो टास्क दिए रहते हैं वो कंप्लीट करना पड़ता है। अगर वो टाइपिंग नहीं करते तो आपको जॉब नहीं मिलता, ऐसा होता है। इसलिए टाइपिंग ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस। we'll start now next classes. Yesterday, last class we have studied about the booting process and types of file. Now we are going to study about hardware parts classification. This course is useful for everybody from high school to up to degree students, diploma students, and the peoples who are appearing for the competitive exams and computer literacy test, data entry operator, computer operator. ये जॉब को वो जो अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कोर्स। Computer hardware parts classification. There are 3 types of classification. First one is input device. The devices which are used to input the data are called as a input devices. कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट्स रहते हैं उसको 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइस, थर्ड वन इज स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट विल सी इनपुट डिवाइस. The devices which are used to input the data are called as a input device. For example, keyboard, mouse, scanner, OCR. OCR means it is also one type of scanner which we can scan it like a signature, or to convert it into a document we'll use as a OCR, optical character reader. A light pen, it is also like a pen, like light pen. We have a graphic sheet. If you write it, it will come into a laptop or a desktop. Then we can see it. Then joystick. This is used for the video gaming purpose. These are the input devices. Next one is output devices. The devices which are used to produce the result are called as the output devices. Example: monitor, printer, speaker, plotter. Plotter means whatever the big banners we are printing, that is called as a plotter. And also a plotter is used for drawing of civil drawings. Building maps drawings are also printed on a plotter. And also vehicle number cuttings are also used in plotter. Types of output. There are 2 types of output. One is a soft copy, another one is a hard copy. If you go for a job, or if you go for an interview, if someone tells you to send a soft copy of your resume or a document, then it means that
you have to type it in a computer and save it and send that file to him. That is called as a soft copy. The file which has been saved in a computer is called as a soft copy. If someone tells you bring a hard copy, means the matter which has been printed on a paper is called as a hard copy. These are the two types of output devices. Output. Next one is storage devices. The devices which are used to store the data are called as a storage devices. हम जो कंप्यूटर के अंदर टाइप करके सेव करते हैं, उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ फ्लॉपी डिस्क. नेक्स्ट वन इज CD कॉम्पैक्ट डिस्क. DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, hard disk drive, that is called as also fixed disk, also non-removable disk, that is inside your CPU or inside your laptop. These are called as a hardware part. We can make hardware part classification: input device, output device, storage device. Next we are going to next classes we are going to study one by one, that is what is input device and how these are classified in detail. Okay, keep watching. ये जो थ्योरी पार्ट रहता है थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, मगर आपका एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा. It is necessary for your examination, so because of that you must have to learn or hear the theory part. After learning theory part, once you become perfect in theory part, then we will move on to practical session. Okay, thank you one and all. आपका हेल्थ का ख्याल रखिएगा, आपका मदर का फादर का ख्याल रखिएगा, सभी फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरह से रहने का. Thank you one and all for watching. Thank you.